डोनेट्स्क के मरिंका में भीषण जंग जारी है। रूस की 68वीं टैंक रेजिमेंट का भीषण हमला, रूसी हमले में धुआं हुआ पूरा इलाका। और आप देखिए, रह रहकर युद्ध के मैदान से ये तस्वीरें आ रही हैं। दोनों तरफ से, दोनों देशों, दोनों आर्मी की तरफ से अलग अलग दावे और लगातार युद्ध पे बढ़त बनाते हुए रशियन सैनिक। और इस वक्त चूंकि स्टूडियो में हमारे साथ यूक्रेन के एक युवा सांसद हैं, उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। और एक बहुत अहम सवाल है जो बार बार सवाल उठाया जाता है और पूछा जाता है, वो सवाल हम युवराज से लेंगे। और सवाल ये कि क्या यूक्रेन भी थक रहा है या यूक्रेन के लोग थक रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति अब पैदा होगी 1 साल के बाद इस युद्ध के। युवराज, आफ्टर अ ईयर ऑफ वॉर, दिस इज अ वरी दैट इज देयर इन द वर्ल्ड दैट वुड द यूक्रेनियंस, दो द वर्ल्ड हैज बीन सेइंग दैट यूक्रेनियंस हैव बीन द ब्रेवेस्ट पीपल एंड यू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट in front of Russia and you're still fighting it head on. But do you think after a year the Ukrainians might get tired of this? There might be a kind of an unrest within the people because of this ongoing war which doesn't seem to end. It doesn't seem like it's going to end in the near future. Two things. I mean, first, if you look at the polls, they are very clear. Ukrainians have lost something and they don't want to give anything to Russia for the fact that they destroyed their lives as it is. So Ukraine is determined to have one thing, for Russians to get out and let us choose our own future. And second, we are in no mood after a year of losses, tragedies, destruction, to give to Russia something for what we have fought for all these years for. The reality is, it's if Britain would invade India and then claim peace after a year and said, just give us West Bengal and you keep the rest. India won't agree to that. Same point for us. We don't agree that Russia keeps any part of Ukraine because we know if Russia keeps any part of Ukraine, this will go on and our sons. No, I was watching one of your interviews. Sorry for interrupting. I was watching one of your interviews and you said, हाँ बिल्कुल आप बता दीजिए। जो युवराज ने कहा वो ये कि किसी यूक्रेन के लोग अभी भी युद्ध में लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में थकेंगे भी नहीं और पीछे भी नहीं हटेंगे। किसी भी सूरत में उन्हें ये भी स्वीकार नहीं होगा कि रशिया किसी एक हिस्से को कब्जा कर ले और फिर कहे कि अब हम शांति स्थापित करते हैं या अब हम सीज़फायर। बिल्कुल। और सुमेरा, जो आप कह रही हैं, इसी बात पर मैं एक सवाल लेना चाहता हूं युवराज से। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रशिया ये कहता है कि यूक्रेन उस पर्टिकुलर एरिया में जिसको डोनबास हम कहते हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहां पर उन जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं उन पर वहां पर क्रूरता करता है। यूक्रेन की फोर्सेस उन पर कहर ढाती हैं। युवराज, आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज एंड यू सेड, quote unquote, we must remember that we have had a war with Russia for 8 years, not last year. For 8 years in the east of Ukraine. On the contrary, Russia claims it's Russian people who are being tortured, who are being shattered, who are being killed, looted by Ukraine forces. What is your perspective on that? I was there in Donbass. In 2014, I worked with journalists in Donbass. I saw what Russia has done there in destroying life as it was there. Historically, because of the Soviet Union, I keep reiterating, the relationship between India and Soviet Union is not just a relationship with Russia. We are part of Soviet Union as well. 3 general secretaries were from Ukraine, actually. So the relationship with the Soviet Union is not a relationship that Russia should own. I saw in Donetsk and Donbass how the Russians destroyed the lives of people there. Right. So they cannot tell me about the claims about destruction by the Ukraine. They destroyed Donbass, the very rich industrial region of Ukraine. And now they claim, they are vindicating that the opposite happens. They keep killing, keep destroying, and they still pretend that if everything is to blame but them. बड़ी बात है ये कह रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ और सुरभि अपने दर्शकों को, जो यहाँ पर युवराज ने कहा मेरे सवाल के जवाब में, वो कह रहे हैं कि रशिया जो कह रहा है कि यूक्रेन के जो फोर्सेज हैं, यूक्रेन की सेना है, वो डोनबास में रहने वाले लोगों के ऊपर कहर ढा रही है, उनको टॉर्चर कर रही है, बिल्कुल गलत है। ये खुद वहां रहे हैं और इनके मुताबिक वहां पर यूक्रेन की सेना नहीं बल्कि रूस की सेना वहां पर रहने वाले लोगों को लगातार परेशान करती है और उनको लगातार रूस के फोर्सेस से दिक्कतें